You can start now. Okay, we're going to start. Okay, so I'm Dr. Mahi Nazir, and today I'll be presenting on clinical audits and quality improvement projects. All right, so the objectives for today's session are to learn the basics of conducting an audit, as well as, which is also a quality improvement project. And we're going to discuss this with examples. And we're also going to discuss how to get started with an audit, especially as a medical student, and the importance of conducting audits and quality improvement projects. So the textbook definition of a clinical audit is that it's a quality improvement process. And it basically assesses whether the current criteria or current clinical practice is in line with the clinical practice that is recommended by guidelines. Also, it's not just collecting data, it involves measuring the current patient care and outcomes against an explicit audit criteria. And these are your standards or your guidelines. And additionally, there is an expectation from the start that outset will be improved after conducting the audit and carrying out the intervention. Okay, so a lot of confusion arises when we want to differentiate between clinical audit and research. The number one question you need to ask yourself about whether the topic that you're considering is more suited for a research or whether it's more of an audit is whether there is a guideline that is being, that's been recommended by, let's say, the WHO, the NIC, the NIH, any governmental body. Is this guideline being introduced as the intervention that is already recommended to be followed all across the globe? If yes, then your research, then your study is an audit. And if it is a completely new intervention, it's a new, let's say, treatment, or let's say it involves control groups or placebo treatments, and it involves extensive surveys, and let's say it involves depression, anxiety scoring as an example of survey. So that would be more of a research, right? And I've also made a table where there's a comparison between audits and research, and you can read that later. I'm going to be sharing this presentation as well, but right now I'll just give you a brief overview. And we will also, as we proceed and with the help of examples, I will also demonstrate how audits are different from the research studies that we normally do. Okay, there's new people joining in. All right, so the most commonly frequently confused research study design with audits is a pre-test, post-test study. Maybe you've heard about it, maybe you haven't, but the gist of this particular research design is that let's say, I'll give you an example. You are going to measure the knowledge regarding, let's say, a particular practice. Let's say it's knowledge regarding emergency management, and you find a questionnaire regarding emergency management. You find it online through a reference study, and this is not some standard questionnaire that's been recommended by NIC or WHO. It's just a questionnaire that's been developed and validated, and you apply this questionnaire and you assess the knowledge levels before applying the questionnaire, and you assess the knowledge levels when you apply the questionnaire for the first time. Then you educate these students, you train them. For example, in emergency management, you increase the duration of their emergency medicine rotation. And then you again apply the questionnaire to assess whether whether the knowledge has improved or not. So this is not an audit. This is a pre-test, post-test study. And this is a research article, or an original article, as you might say, because it does not involve it does not involve an already set guideline or, that's been recommended by some governmental body. It just involves a questionnaire that we picked off the internet, and then we ourselves did some intervention, like increasing the duration of the emergency medicine rotation. And the examples that I will discuss will demonstrate that an audit is different. And as I'm repeating again, it's going to have a set guideline that is going to be that's going to be checked whether it's being followed or not. Okay, so the types of audits are
there's a variety of audits. There can be audits involving patients, whether the treatment that they're being administered is appropriate. I mean, whether they're getting the right dosage of the medication, whether the medication that they're being given is administered to the correct route. For example, insulin उनको ठीक लग रही है, subcutaneous लग रही है, 90 डिग्री पे लग रही है नहीं, तो कुछ लोग observe करेंगे कि लग रही है नहीं, फिर report करेंगे कि जहाँ नहीं लग रही. And then, the set standard is that it should be 90 degree injected 90 degrees subcutaneously. So that's already a standard, right? So something like that. Or it could involve examining patient pathways. जैसे कि कभी-कभार we're going to find cases where discharge of patients is delayed, which results in prolonged stay at the hospital. And this could be a point where we could conduct an audit that what is the reason behind this delayed discharge. And if we find out that, okay, there's a discharge summary problem, we're going to find the guideline for the discharge summary, whether it's local, whether it's national. We're going to educate people to follow that guideline. And then we're going to reassess whether it has decreased the time of discharge or not. Other are process audits, for example, whether certain drugs are being given to the correct patients. And there's also audits of outcomes in which you see if an intervention makes an impact on mortality or morbidity, but these are more complex and involve a lot of confounding factors. So I would recommend that you, for a beginner, you avoid these kind of audits. There's also audits on physician awareness, training, and education, and we'll see that in an example. Okay, so just a disclaimer, the slides may have a lot of information on them, but I'm trying my best to summarize as well as I can. And I'm trying my best that you guys don't get as overwhelmed with this information. Okay, so a clinical audit basically involves cycles. Cycles, you could say that they're phases. So in cycle 1, which is the first phase of your clinical audit, the first step is going to be selecting a topic and establishing what the standards of best practice, also known as audit criteria, are. जैसे कि आपको मैं अपना example दे देती हूँ. In the study that I conducted with my colleagues, was that we observed that the surgical safety checklist, which if you've been to the operation theaters, it's a part of the patient's file. We observed that it was not being routinely followed, right? And this surgical safety checklist is endorsed by the WHO. So it's a standard of best practice. So we observed that it wasn't being followed, and we decided to conduct a topic, which is compliance with surgical safety checklist and audit, because we had the audit criteria and we had our topic as well. Then next, we made a team, and the person who comes up with the topic, or let's say has the most knowledge about the topic, is going to be appointed as the team leader. And it's important to appoint the team leader at the right time. At the very start, before you start anything, because this has implications later on. Then the next step is drafting a proposal. Now, this is similar to drafting a research synopsis, and it will include an introduction, it will include a methodology section, it will include references, and it will include the pro forma that you're going to be using to collect your data. And then the next step is to get this proposal approved by the head of department, wherever the department that you're conducting the audit is. Now, in research, it is mandatory to get ethical review board approval. That, you have those meetings where your synopsis is checked and all of that, the entire process. It's not necessary for an audit to go through that process. However, there are some journal articles that demand an ethical approval. So just to be on the safe side, I think that these audit proposals should also be submitted to an ERB. But in the UK, there are separate boards for assessing whether an audit is feasible or not, and whether it can be done or not. So basically, it approves the audits, and there's a convener called an audit facilitator who will assess all the audits and keep a record of them. So it's a separate body. But in our case, it's either the ethical review board that you can get it approved by, or you can get a departmental letter approving your synopsis and clearly stating that the head of department approves this synopsis and this audit project that is going to be carried out by these students. Okay, the next step is collecting the data, analyzing the data against the standards, and then making the results. And then
this is where it gets really important. You have to recommend possible changes that should be, I mean, you have to. अस्सलाम वालेकुम, आप प्लीज थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दें, साथ साथ पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं. Okay, sure, I'll do that. All right. Okay, so we're going to transition to Urdu as well. Okay, so collecting data, making the results, and discussing possible changes. So discussing possible changes will include कि आप क्या ऐसी तब्दीलियां ला सकते हैं जिससे जो आपकी प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो जाए, या फिर आपकी जो कंप्लायंस है विद द सेट स्टैंडर्ड्स, विद द गाइडलाइंस, वो ज़्यादा हो जाए. और फिर उसके बाद आपने वो इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, और फिर उसके बाद you're going to give time for the changes to you're going to give time for the changes to settle in before you conduct a re-audit. और re-audit जो होगा वो cycle 2 होगा. Cycle 2 में you're going to collect a second set of data, you're going to analyze the data again, you're going to see whether the intervention that you applied has improved outcomes, you're going to discuss whether the practice has improved, and finally you're going to present and publish your results. Okay, so this is just like on the, I believe on the right side, you can also see the audit cycle. I'm just going to stop my video for a while. Okay, so on the right side, you can see the audit cycle. And जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले आपने problem identify की, फिर आपने standards जो हैं, guidelines जो हैं, उनको obtain किया, फिर आपने data collect किया, और फिर आपने उस data को compare किया कि जैसे for example 50% of the patients were being administered the correct drug as defined by the NICE guidelines. फिर आपने उसकी कोई intervention की, जैसे आपने पेशेंट की फाइल के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया कि आपने इसको इतना ड्रग देना है in this dosage at all costs according to the whatever the criteria is, and then you're going to re-audit. आपने फिर से वो पूरा data collection का procedure करना है after some time, for example 2 weeks after you applied the intervention, to see whether the results have whether the practice has improved. Okay, let's say 50 से 70% patients जो हैं उनको correct drug मिल रहा है correct dosage में या नहीं. And then you're going to explain the changes that you made, and you're going to make further recommendations about how these changes can be kept permanent. Okay, so as I mentioned earlier, it's really important कि आप team leader पहले से appoint कर लें, like before submitting the proposal, क्योंकि वो team leader जो होगा, he or she is going to train the other participants as to how to administer the questionnaire, कि उन्होंने data कैसे collect करना है, उन्होंने बाद में फिर उस data को present कैसे करना है, और basically the leader is the person who's most involved in the project. And later on, when you're writing an audit, it's important that you mention that there was a team leader who trained this number of people, and then the data collection was started. Okay, so now we're going to discuss about how to make a proposal form for an audit. Okay, I can see some questions coming in. Let me just see. Okay. All right. I'm going to answer all your questions, inshallah, at the end of the presentation. Right now, hopefully most of your questions will be answered while I'm giving the presentation. And I'll also try my best to also speak in Urdu. Okay, so step 1 is topic selection and identifying your criteria. अब ये है कि आप जो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, आपने पहले भी सुना होगा, it should be according to the SMART criteria. That is, it should be a specific topic, it should have measurable elements. जैसे जो आप चीज़ देखना चाह रहे हैं उसको आप quantify भी कर सकते हैं, उसकी frequency percentage भी निकल आए, वो आपके लिए feasible हो. मतलब कुछ इस तरह के data collection होते हैं जो आप कर ही नहीं सकते, आपकी at student level they're beyond your capacity, even at consultant or trainee level. And whether that audit is relevant to your setting, मतलब कोई important topic पे audit होना चाहिए जिससे कोई फायदा भी हो patients को, and it should be time bound. अब ये है कि audits are not supposed to be years long. I mean, maximum it can go for 1 year, but it should not be too extensive as regards to time. और फिर जो आपने चीज़ करनी होती है, once you finalize your topic,
आपने ये देखना है कि इसके ऊपर WHO गाइडलाइन कोई है, कोई NIC गाइडलाइन है, किसी भी तरह की रिसर्च बेस्ड गाइडलाइन अवेलेबल है या नहीं. और अगर गाइडलाइन भी है, आपका टॉपिक भी स्मार्ट क्राइटेरिया से कंप्लायंस में है, तो यू कैन गो अहेड एंड परस्यू दिस एज एन ऑडिट. Okay. And I also have linked a website where you can find different topics for audits that are being practiced in the UK. UK में national registries होती हैं जहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि ये audits हैं जो अभी हो रहे हैं, तो आप even as a participant उनमें register कर सकते हैं when you're a trainee over there. Okay, अब हमने topic select कर लिया, हमने अपनी criteria identify कर लिया. Uske baad, we're going to define our aims, our aim, which is the general aim, and then it's broken down into some objectives. Then we are going to identify our targets as well. So isko main explain karti hu is table ko. Let's say we have a clinical audit on screening post-MI patients for whether they should get an intracardiac device implant. ठीक है, अब इसमें हमारी aim क्या है कि क्या वो patients जिनको heart attack हुआ है, are they being referred for further investigation according to the local guidance? तो इसके लिए भी एक कोई algorithm होता होगा जिसकी basis पे आप refer करते हो कि इन MI patients को इसके बाद आपने ICD जो है वो insert करना है या नहीं. तो this is a general aim. और फिर उसमें smaller objectives जो उस aim का ही हिस्सा होंगे, they are to check that all patients who have ST elevation MI or non-ST elevation MI or troponin positive patients, these patients are followed up on discharge, and to check that these patients receive an echo at least 4 weeks post-event. So ये जो objectives है ना, ये probably these are the criteria that are required in order for these patients to get referral for ICD. तो इस वजह से इन्होंने इन objectives को लिखा हुआ है. अब criteria जो है ना, the table that you're seeing at the bottom is the standards table. So the standards table has 4 columns. The first is the criteria. Criteria is basically जो objectives हैं उन्हीं को उन्होंने दोबारा से लिखा है, which are based on the national guidelines or the local guidelines. Target 100% का मतलब ये है कि जितने भी patients जिनके पास जिनको diagnosis हुआ है of STMI, NSTMI और वो troponin positive हैं, उसमें से 100% patients की follow-up होनी चाहिए 4 to 6 weeks post discharge. और इसी तरह से उसमें 100% patients का echocardiogram होना चाहिए जब भी वो follow-up के लिए आए. और exceptions का मतलब है the exclusion criteria. So if the patient has been deceased within this time, you will not give him a follow-up post discharge. And what is the source and strength of evidence? That all comes back to what the source of this criteria is. So for the first objective or criteria, the source is a local policy. And for the second objective or criteria, the source is a national policy or the NIC guideline, the National Institute of something guideline. Okay, so we've covered topic selection, we've covered aims and objectives. Now we go on to the methodology. Methodology में आपने बताना है कि audit हो कहाँ रहा है. Allied hospitals हैं, BBH है, HFH है, DHQ है, जो भी आपका hospital है, department है, वो mention करना है. फिर आपकी study population क्या है, for example, patients who have undergone MI, whatever it is. फिर आपकी audit की duration क्या है. अब मैंने आपको बताया था audit में एक से ज़्यादा cycle होना लाजमी है. अगर सिर्फ एक cycle है तो वो उस audit का कोई फ़ायदा नहीं है. आपने उस audit को उस audit cycle में एक और cycle add होगी तब जाके वो एक audit loop बनेगा, and that will be considered as the actual component of an audit. You shouldn't leave it after one cycle. Minimum 2 cycles are required, and you also have to mention the duration of each cycle, start end date. जैसे for 1 month की एक cycle हुई, फिर आपने intervention की 1 महीना 2 weeks छोड़ दिया intervention के बाद to let the change settle in. फिर आपने दोबारा से audit किया 1 महीने का, and that is like approximately about 3 months of study, right? Involving 2 cycles plus intervention and time for the change to settle in. And it's also important, जैसे कि मैंने mention किया, that you have to close the loop. You have to make sure that there's another cycle as well. Otherwise, it won't be as effective. Audit design, अब कुछ audits जो होते हैं वो prospective होते हैं, यानी कि they go forward in time. Patient आपके पास आया, आपने उसका data collect किया. और कुछ retrospective होते हैं, आपके पास पहले से files होती हैं,
और आप उनसे देखते हो. Recommended है prospective, हमने भी prospective ही किया था, so I think you should go for that one. उसके अलावा it can be a single center, जैसे कि one department of BBH, or it can be multicentric involving different hospitals. Now this depends कि बाकी सारे हालात hospitals के similar होने चाहिए, और मतलब वो confounding ना बन जाए. तो इस sense में multicentric भी ठीक है, single center भी ठीक है, depending on what your topic is. Okay, so the type of intervention being planned after each cycle. अब मैंने आपको जैसे कि बताया audit cycle, पहली cycle के बाद आपने intervention करनी है. वो क्या intervention है? वो educational seminars हो सकते हैं, वो phone reminders हो सकते हैं, text messages के जरिए, वो ये हो सकता है कि आप स्टिकर चिपका दो पेशेंट की फाइल पे कि पेशेंट को इतनी मेडिसिन मिलनी है इतनी डोज में. तो ये सारी आपकी इंटरवेंशंस हैं, और ये इंटरवेंशन आपने डिस्क्राइब करनी है अपने मेथोडोलॉजी सेक्शन में. आपने इसमें सैंपल साइज भी निकालना होता है और सैम्पलिंग टेक्निक भी करनी होती है. लेकिन ऑडिट में अब ये है कि अगर आपकी पेशेंट पॉपुलेशन, आई डिस्कस दैट इन अनदर स्लाइड, लेकिन अगर पेशेंट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो यू नीड टू कैलकुलेट अ सैंपल साइज like you calculate it in, let's say, in a research article. उसके अलावा you should obtain informed consent from the patient, and you should ensure that there's confidentiality of the data and departmental approval. आपका inclusion exclusion criteria होना चाहिए, आपके पास pro forma होना चाहिए, और यहाँ पे mention करने की जरूरत होगी कि leadership role जो था वो किस तरह justify हुआ है. जैसे leader ने अपने fellow members को train किया in how to administer the audit and supervise them. Generally बाहर ये होता है कि the leader of the audit is a trainee, but if you're student and it's student led, then you can be a leader. Just make sure that you have a supervisor as well, who can be like an AP or a resident as well. And then जैसे आप research में data entry analysis करते हो, वैसे ही आप यहाँ पे भी करते हो. Okay, so a little more focus on sampling technique and sampling size. As I mentioned earlier, कि अगर आपका sample size जो है, अगर आपकी study population ज़्यादा है, तो आप जो है वो जैसे research में एक representative sample size निकालते हो, और फिर उस representative sample size का ideally आपको random sampling करनी चाहिए, either simple or stratified, and you use the software like EpiInfo to calculate the sample size. But if your population size is small, let's say आपके वार्ड में 50 पेशेंट्स हैं या 20 पेशेंट्स हैं, तो आप एक कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग करोगे, सारे पेशेंट्स को इंक्लूड करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर इंक्लूजन क्राइटेरिया दैट दे आर फुलफिलिंग, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्नैपशॉट सैंपल. ठीक है, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, बस डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन क्या है. और regarding sampling and sample size, those of you who don't know much about these things, at the end of the slides I've linked some resources that you can consult. अभी हमारा क्योंकि वो फोकस नहीं है, तो I won't be going into much detail about that. अच्छा, अब एथिक्स ये है कि आपका जो भी ऑडिट का प्रोजेक्ट हो, ऑल्दो इसमें एथिकल अप्रूवल और कंसर्न इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ऑडिट डज नॉट हार्म पेशेंट्स. इट मेक श्योर दैट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज देयर. उनकी कोई पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो ऐसी ना मतलब लिखी हुई हो ऑडिट में कि वो ट्रेस हो सकें, और उनका कंसेंट होना चाहिए. Okay, so the next step is presenting and publishing your results. अच्छा, अब ये है कि जैसे आपकी रिसर्च पब्लिश होती है, वैसे ही जर्नल्स आपका ऑडिट भी पब्लिश करते हैं, और अगर जर्नल्स आपका ऑडिट ना भी पब्लिश करें तो it's mandatory that you make an audit report. And an audit report is similar to a research article, you can say, but it does have certain differences that I've pointed out in earlier slides while I was explaining the synopsis making. अच्छा, अब ये है कि आपकी जो रिपोर्ट होगी उस पे आपने बैकग्राउंड मेंशन करना है. जितनी भी चीजें आपने अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन की है ना, उन्हीं को आपने मेंशन करना है अपनी रिपोर्ट में. प्लस इसमें आपके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे. आप रिजल्ट्स आपने जो है पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, और एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है रन चार्ट्स, इनको लाइन डायग्राम्स भी कहते हैं, इसके थ्रू आप डिपिक्ट करते हैं. आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट लेटर ऑन. फिर उसके बाद यू कम टू कंक्लूजन्स कि आपको क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होना चाहिए, फर्दर रिकमेंडेशंस क्या हैं. आप रेफरेंसेस भी लिखोगे, ठीक है. आप डिस्कस भी करोगे अपने ऑडिट को बाय कंपेयरिंग इट विद अदर ऑडिट्स और अदर स्टडीज, एंड यू विल अटैच योर क्वेश्चनेयर एज वेल. फिर आपका जो नेक्स्ट टास्क होना चाहिए आफ्टर मेकिंग योर ऑडिट रिपोर्ट एंड आफ्टर ऑल्सो सबमिटिंग इट फॉर पब्लिकेशन, the important task, or actually before that, whenever you get that slot,
is कि आपने अपनी डिपार्टमेंट में इस ऑडिट को प्रेजेंट करना है एनी टाइम दैट द HOD अलाउज. आप उनसे बात कर लेना कि हमें मॉर्निंग मीटिंग में प्रेजेंट करने दें या फिर किसी और मीटिंग में. सो if you've kept your HOD or your AP or a senior who is a part of the department, if you've kept them updated with where you are in your audit and if you've taken their consent, hopefully वो आपको encourage करेंगे कि आप present करें और वो आपको support भी करेंगे in conducting the audit. Okay, अब कुछ guidelines हैं for reporting audits और इनको कहा जाता है the revised standards for quality improvement reporting excellence, Squire 2 guidelines. अब मैंने जितनी इस गाइडलाइंस में चीजें आपने मेंशन करनी चाहिए अपने ऑडिट में जो मैंडेटरी हैं वो मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड से मेंशन कर दी हैं. But just as a checklist, whenever you're writing an audit, I've shared the link as well to make sure that you're checking if your article report or your journal article is in compliance with these guidelines. Okay. So at the end आपने अपनी जब आप अपना आर्टिकल उसके एंड पे आएंगे तो आपने डिस्कस करना है पॉसिबल चेंजेस क्या हो सकते हैं, फ्यूचर रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं, आप इन जो आपने इम्प्लीमेंट किया है जो इंटरवेंशन इसको परमानेंट कैसे किया जा सकता है. और इसमें हेल्पफुल ये है कि आप थोड़ा सोचें. इनफैक्ट आपको ये पहले से जब आप अपना ऑडिट कर रहे होते हैं उस दौरान भी आई विल एक्सप्लेन लेटर हाउ यू कैन डू दैट. आप सोचते हो कि why is this practice not being followed in your setting in the first place, मतलब what is the reason. अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस. रूट कॉज एनालिसिस के कई तरीके होते हैं. सबसे आसान तरीका ये है कि आप 5 वाइज क्वेश्चन पूछें, मतलब you ask 5 questions, you determine 5 different causes that could be leading to this particular problem. उसके अलावा एक चीज होती है फिश बोन डायग्राम्स और ऑल्सो नोन एज कॉज इफेक्ट डायग्राम्स विच कैन शो what are the multiple causes that can result in this particular problem where this particular guideline is not being followed. उसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है प्रोसेस मैपिंग जिसमें आप पूरा मरीज का फॉलो करते हो कि वो OPD से लेके वार्ड तक कैसे आया, उसकी क्या मतलब it's basically used in process audits. And उसके बाद when you find the potential causes, आप उन causes की basis पे अब आप अपनी recommendations करोगे कि आप लोगों को ये change करना चाहिए या आप लोगों को इस तरह से permanent करना चाहिए, आपको हर 3 महीने बाद कोई educational seminar करना चाहिए for example जिसमें nurses को आप train करें on how to conduct this type of resuscitation. For example, if resuscitation guidelines are not being followed, तो इस तरह से it's very important कि आप अपने audit में recommendations बताएं कि आगे के लिए क्या करना चाहिए. So that's just a cause effect diagram and this is process mapping. Okay, so one particular term that you will hear is quality improvement projects in healthcare. ये कोई ज़्यादा complex चीज़ नहीं है, इसमें बस ये है कि clinical audits are basically they are types of quality improvement projects if they involve PDSA cycles, which is Plan, Do, Study, Act cycles. अब ये क्या होती हैं, I will explain in further slides. Okay, so this is a Plan, Do, Study, Act cycle. And on the right side, you can see a model for learning and change. So this is just to familiarize you with some terms. आपने बस ये याद रखना है PDSA एक cycle होती है जो कि आपके हर जो audit की cycle अब मैं explain कर चुकी हूँ आपको कि एक audit में एक से ज़्यादा cycle होती है. उस cycle के components ये होने चाहिए. Plan, Do, Study, Act. Plan means to propose a change in idea and how it will be tested and to predict what will happen. यानी कि topic selection, audit criteria वो सारी चीजें. फिर do में you implement the change, you collect the data. Study में you analyze the data. And act में you will share your recommendations for whether this intervention should be adopted to improve compliance with guidelines or not. Okay. Okay, so a worked example for Plan, Do, Study, Act जो है वो Plan, Do, Study, Act cycle के लिए ये है कि let's say that we observe that in a urology ward there are patients who are being unnecessarily catheterized. मतलब उनको urinary catheters उन patients को pass किए जा रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है. और
नाइस गाइडलाइंस हैं या WHO गाइडलाइंस हैं जो कहती हैं कि आपने इन पेशेंट्स को who have let's say this amount of urinary output, these symptoms, only these patients should be catheterized and these should not. We observe that even patients who don't require catheterizations are undergoing the procedure. तो हमने एक issue identify किया, ठीक है, और हमने कहा है कि our objective is, in our plan we will write our objective that we do not need any unnecessary urinary catheterizations and we want to reduce this number, and the target is that 100% patients जो हैं उनको जो है वो appropriate urinary catheterization हो, ठीक है। फिर उसमें वो सारी वो प्लान करोगे, आप अपना प्रपोजल बनाओगे, आप मेजर करोगे क्वालिटी इंडिकेटर्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए फॉर पेशेंट्स व्हेन दे आर अंडरगोइंग कैथेटराइजेशन, और फिर आप एक चेंज सिलेक्ट करोगे। सो बेसिकली प्लान इज दैट फेज वेयर यू आर मेकिंग योर प्रपोजल, ठीक है, कि ये आपने वो जो मैंने आपको पहले सारा एक्सप्लेन किया था कि आपने उसका साइनॉप्सिस बनाना है। और जो चेंज जो इन्होंने रेकमेंड किया था अपने इस एग्जाम्पल में वो ये था कि इन्होंने एक स्टिकर लिया जो कि केस नोट्स जो पेशेंट की फाइल होती है उस पर उन्होंने लगाया, और उन्होंने कहा कि इस चेक, और वो बेसिकली एक चेकलिस्ट है जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं ना, दिस इज द चेकलिस्ट दैट हैज बीन promoted by the national body for which patient should be catheterized. ये स्टिकर उन्होंने पेशेंट की फाइल पे लगा दिया और उन्होंने कहा कि इस चेकलिस्ट को फिल करना मैंडेटरी है बिफोर कैथेटराइजिंग एनी पेशेंट, ठीक है। ये इस चेकलिस्ट की क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आपने पेशेंट को कैथेटराइज करना है। दिस इज द प्लान, दिस इज द साइनॉप्सिस। ये पी पार्ट ऑफ PDSA साइकिल हो गया। फिर डू है, डू में आप क्या करोगे, यू विल इम्प्लीमेंट द चेंज, यू विल इम्प्लीमेंट द चेकलिस्ट, आपने अप्लाई किया वो स्टिकर, आपने स्टाफ को ऑन बोर्ड लिया वगैरह वगैरह, और फिर आप स्टडी करोगे, ठीक है। द नेक्स्ट फेज ऑफ द साइकिल इज स्टडी, studying what the outcome, whether there is now a decrease in the number of inappropriate catheters, जो आप guidelines आपके mind में होंगी या आपके पास present होंगी in the form in written copy, आप उसके against check कर लोगे कि अब मैंने जब intervention apply कर दी, मैंने 2 हफ्ते दिए, तो अब कितने patients हैं जिनको अभी भी unnecessarily catheterize किया गया है, right? So that's going to be your outcome. And यहाँ पे एक term लिखी हुई है balancing. Balancing in this context basically refers to a confounding, जिसमें वो patients हैं जो जिनको catheter लगना चाहिए था but उनको नहीं लगा, तो that's just something that they've mentioned, a consideration that they took, ठीक है। और फिर finally PDSA में act होता है in which you adopt, you reject or you modify the intervention based on your outcome, and then again you retest this through a PDSA cycle. So I hope it's clear that PDSA cycle is it's not anything different. It's just कि आपकी जो audit की cycles होनी चाहिए, they should be based on this concept कि आपके पास एक plan होना चाहिए जो कि synopsis है, फिर आप उस plan को implement करोगे, फिर आप उसके outcome study करोगे, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्या आपकी जो intervention थी उसको उसके ऊपर act करना चाहिए, उसको reject करना चाहिए, उसको retest करना चाहिए, ये सारी चीजें। Okay. So this is just a quick diagram of a run chart. जैसे कि मैंने पहले mention किया था results की जब मैं बात कर रही थी कि run chart is another, it's also called a line diagram for depicting the changes. तो आप देख सकते हैं diagram पे x axis पे आपके weeks हैं, time है, और y axis पे आपके पास number of inappropriate urinary catheter insertions है. And you can see that from the start that the checklist was introduced, it has shown an almost overall downward trend in which the goal is almost reached. यानी कि inappropriate catheterizations जो हैं वो decrease हो रही हैं with the passage of time as we've introduced our checklist. Or you can see that they've also marked where the checklist was modified, where the checklist was attached to catheter packs, और फिर उसके क्या impacts हुए. So this can easily be analyzed through SPSS, जो कि आप research के लिए भी करते हैं. Okay, अब आपने अपना पूरा audit कर लिया, आपने अपनी report लिख ली, आपने presentation दे दी, अब आपके पास evidence क्या है? Apart, चले let's say आपका अभी journal article accept नहीं हुआ, आपके पास evidence होना चाहिए कि you took part in the audit and what your role was, whether you were a leader, whether you were a team member, what did you do in your participation of in this audit. So I got this from one of the websites where they recruit trainees based on whether they've completed an audit or not. और वो मैं आपको आगे बताऊंगी.
So it's just a quality improvement project assessment tool. आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ चीजें मेंशन है जो हमारे सेटअप पे अप्लाई नहीं होती. इसमें that includes GMC number and trainees year और इस तरह की चीजें. इसमें बस PMDC number आ जाएगा. But when you're making a document for to collect as proof that you've participated in audit and you're getting it signed by your HOD, आप ये चीजें मेंशन कर दीजिएगा जो चीजें हमारे सेटअप में अप्लाई होती हैं. Okay, and now what's the importance of clinical audits? So audits help to improve patient care and can be the driving force for immediate change. And this compared to research. So research, जो आपके articles होते हैं, let's say meta-analysis हो गया, systematic review हो गया, these aren't original articles, but ये highest form of evidence है, right? इनके changes को implement होते होते कई साल लग जाते हैं, let's say 10 years लग जाते हैं. लेकिन जो audit है, अगर आपको पता चल गया कि क्या मसला है, और आपने इंटरवेंशन अप्लाई कर दी जिससे एक विजिबल चेंज नजर आ रहा है, तो वो इमीडिएट चेंज लाता है, वो इमीडिएट इंप्रूवमेंट इन पेशेंट केयर ला सकता है. एंड आप अगर बाहर अप्लाई कर रहे हैं फील्ड्स के लिए, फॉर एग्जांपल स्पेशली फॉर द यूके इंडक्शन क्राइटेरिया हैज पर्टिकुलर मार्क्स फॉर ऑडिट्स. तो आप अगर सपोज रेडियोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आपने रेडियोलॉजी में ऑडिट किया है, आप अगर ऑब्स्टेटिक्स में इंटरेस्टेड है, आपने ऑब्स्टेटिक्स में किया है, तो इट विल शो योर इंटरेस्ट. और इसके अलावा आपको टीम वर्क आ जाता है, आप इसको ऑडिट्स को आप प्रेजेंट कर सकते हो कॉन्फ्रेंसेस पे, आप उनको पब्लिश कर सकते हो, सीवी पॉइंट्स अच्छे हैं. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया विच आई वाज रेफरिंग टू. ओके, so this is the resident recruitment criteria in the NHS in the UK, and as you can see there are the maximum marks available are 5 points. 5 points for involvement in all aspects, यानी कि पूरी PDSA cycle, synopsis, results, data collection, सब कुछ of an original QI project, and you also demonstrate leadership by supervising other members of the team. Now, how will you have evidence that you've been a leader? Through this, through your participation form, कि आपने किया क्या. इधर आप मेंशन करेंगे कि आपका रोल क्या था एज एन इन दैट ऑडिट. और जब आप अपना आर्टिकल भी सबमिट करवाएंगे, उसमें भी वो पूछते हैं कि कौन से ऑथर ने क्या किया, तो इन दैट यू विल ऑल्सो मेंशन व्हाट योर पर्टिकुलर रोल वाज. फिर यू विल और फिर जैसे जैसे आप देख सकते हैं मार्क्स कम होते जाते हैं. So this is one of the things that you're scored on when you're applying for residency in the UK. And if you're involved as a student, it's great. Even if you don't, fulfill whatever their criteria is, it's a great learning opportunity for you as well. Okay, so we're going to discuss 2 examples of audits that were done by students from Rawalpindi Medical University. The first is preparedness of healthcare personnel against the COVID-19. आप लोग इसको जब आपको टाइम मिले इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है. and it was published in Frontiers in Public Health, which is a great journal as well. इसमें इन्होंने किया ये कि जब कोविड आया तो हेल्थ केयर पर्सनल को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इमरजेंसी. एंड एज यू नो देयर वर WHO गाइडलाइंस ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड all of those things. So what these students did at the time was that they first evaluated the baseline knowledge about emergency preparedness regarding COVID-19. उन्होंने questionnaire administer किया through convenience sampling, WhatsApp पे दे दिया. और उनको इंक्लूड किया, जैसे कंसल्टेंट्स थे, जितने भी आपके हेल्थ केयर स्टाफ थी, नर्सेस थी, उन सबको दे दिया और वेट किया. फिर उन्होंने देखा कि बेसलाइन नॉलेज है क्या, और उसके बाद व्हाट दे डिड वाज दैट दे परफॉर्म्ड एन एजुकेशनल इंटरवेंशन. उन्होंने उन सारे लोगों को एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया विच वाज क्विक, एंड इट वाज बेसिकली डिजाइन टू जस्ट वो गो थ्रू करेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्या गाइडलाइंस हैं. And then they assessed the knowledge again and they saw an improvement. So basically this was a 2-cycle audit loop, and it had such a good methodology and it was so well written that it got published in a really good journal. इसके अलावा मैंने आपको इस आर्टिकल के बारे में भी पहले भी मेंशन किया था, आप इसको भी देख सकते हैं. And I've linked, if any of you isn't familiar with calculating sample size or sampling techniques, you can refer to this material. And that's it. I'll be happy to answer some questions now.
Okay, so I'll start with the first question that we got to explain the multi-loop cycle part again. I think I wasn't clear at the first time. I'll explain it again. So multi-loop cycle ये होता है कि जैसे कि मैं आपको I'll just go back. Hold on. Okay. So हाँ, अब आप राइट साइड पे देखें एक ऑडिट का एक साइकिल बना हुआ है. ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे साइकिल 1 साइकिल 2 की हेडिंग्स के नीचे पूरी कहानी लिखी हुई है कि समराइज हुई है राइट साइड वाले डायग्राम में. तो एज यू कैन सी द फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई इश्यूज, फिर आपने स्टैंडर्ड्स, आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, आपको स्टैंडर्ड्स मिले, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने फिर इंटरवेंशन अप्लाई की, आपने वेट किया, फिर आपने दोबारा से डेटा कलेक्ट किया और फिर आपने देखा कि ओके is there any has there been an improvement, has there not been an improvement, should we do more cycles, should we change the intervention that we've applied. तो इस तरह से जब आप एक साइकिल करते हो और फिर उसके बाद दूसरी साइकिल करते हो इंटरवेंशन के बाद, दैट इज वन क्लोज्ड ऑडिट लूप. 2 cycles make 1 closed audit loop. बिकॉज अगर आप सिर्फ एक ही साइकिल करोगे तो लेट्स से आपने देख लिया, आपने एक साइकिल के बाद तो आपने सिर्फ इंटरवेंशन करनी है, राइट? आपने डेटा कलेक्ट किया, इंटरवेंशन किया, आपको नहीं पता कि उस इंटरवेंशन का फायदा हुआ भी है या नहीं जब तक आप दूसरा अपना नहीं करते ऑडिट साइकिल. Okay, why would any hospital establishment give consent for the audit? You would be surprised by how much audits are endorsed by hospitals. बहुत ज़्यादा इसको encourage किया जाता है, especially NHS में. हमारे hospitals में इतने सारे students ने किया हुआ भी है audit. I'm one of them. And as long as your department is a supportive department, and you know they when you present them with a proposal and they appreciate your proposal, that's a sign that they are happy that you are conducting this audit. So आप बस अपना proposal well planned printed लेके जाएं उनके पास, और उनको अगर नजर आए कि इसमें फायदा है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड भी करेंगे. उनको आपसे एक्सपीरियंस उनका इतना अच्छा होता है कि उनको पता होता है कि इस चीज का फायदा होगा, इस चीज का नहीं होगा. तो hopefully if you've got your plan in place, people will encourage you to pursue the project. Okay, how do we ensure that health providers... Okay, that's a very good question. So one of the questions we have is how do we ensure that health providers don't alter the usual practice upon learning that a clinical audit is ongoing? Blinding measure क्या होना चाहिए? इसमें ये है कि आपको सिर्फ there's a measure of that you don't disclose the audit with everybody that it shouldn't be disclosed to everybody that you're conducting this audit. So for example, अगर आपने patients से consent लेना है, so you're not really going to be, in the first cycle, you're not really going to be, talking to the staff about the audit that you're conducting. In the first cycle, you're just going to be observing as a medical student. आप जाओगे, आप patient की file खोलोगे, आप देखोगे कि patient को catheter, let's say, जो मैंने example दिया था, catheter according to guideline लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ. अगर नहीं लगा हुआ, आप अपने proforma में fill कर दोगे उसकी details जो भी valid हैं आपके proforma में, और आप लिखोगे कि okay, this patient has not out of these patients, this patient has been inappropriately catheterized. You won't mention who the staff was, who the doctor, you won't mention details like that. You'll just mention what you observe as a medical student or as a trainee. And then after the second, when you've done your intervention, ab sabko pata hoga that this is an audit. And they're going to try, now the purpose is that everybody should know and they should implement. So now you're out of the observation phase and everybody is going to be hopefully going to be motivated to follow the guidelines, and then you record. So point ये है कि लोग ऐसे change नहीं करते intervention when you're just observing. It could be a possible confounder, but if you keep it to yourself and between you and your consultant or your HOD or your whoever your supervisor is, then you're probably safe from that happening. How do you check that your intervention has used with the re-audit? जब आप आप खुद, आपकी एक टीम होगी ना, एक लीडर होगा, उसमें कुछ डेटा कलेक्टर्स होंगे. डेटा कलेक्टर्स की जॉब होगी कि वो जाएं और मेक श्योर करें कि हर किसी के उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, या फिर लेट्स से हर किसी को वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं. तो आप खुद वो इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करवा रहे होगे और फिर उसके बाद आप री ऑडिट करके देखोगे कि आपकी इंटरवेंशन सक्सेसफुल है या नहीं. अच्छा, would a database study of adherence to QIs at hospital and patient level without intervention be considered an audit or a retrospective cohort study?
I think it would be considered as a cohort study because there's no intervention and you're just assessing. I mean, there's no, it's going to be, I would say it would be a descriptive cross-sectional study. Cohort के लिए भी आपको एक control group चाहिए होता है. But from my understanding, it's not an audit. What if there's no positive outcome after an intervention? So that would be an unfortunate case. But you can still, अब आपकी जब एक intervention काम नहीं करती, तो फिर आप दोबारा से एक इंटरवेंशन लेके आते हैं और फिर दोबारा से एक साइकिल करते हैं, तो फिर 2 के बजाय 3 साइकिल्स हो जाएंगी या 4 साइकिल्स जाएंगी जब तक आपका डिजायर्ड चेंज ना आता हो. यूजुअली एक अगर आपका टॉपिक ऐसा होता है कि एक साइकिल के बाद आपको चेंज नजर आता है, इवन इफ इट्स अ स्मॉल चेंज, तो लेकिन अगर ना हो तो you'll need to conduct more cycles. How many participants? I would say 8 or 10 is fine, depending on, आप ये भी देख लो कि जिस जर्नल में आप पब्लिश करना चाह रहे हो उसमें ऑथर लिमिट कितनी है, उसके हिसाब से आप participants decide कर लो. Annals of Medicine and Surgery is a journal that publishes audits. Curious is also an online journal that publishes audits. The audit that I've encouraged you all to read has been published in Frontiers in Public Health, which is a really good journal. So, आपने अगर journal पहले से देखा हो ना, कुछ journals आप देख लो उसी planning stage में, आप उस हिसाब से अपने team को adjust कर लो. Can a brochure? Yes, it can be used as an intervention. Depending on the cycles, will determine how many months it will take to conduct a clinical audit. And yes, re-audit is necessary. There's a question whether audit counts as research in one's CV. It's not a research article, but it is published in research journals. It will count as a publication. जैसे आप अपनी अगर पब्लिकेशन सेक्शन में देखें तो उसमें ओरिजिनल आर्टिकल्स आते हैं, ओरिजिनल आर्टिकल्स में आपकी क्रॉस सेक्शनल होगी, कोहॉर्ट होगी, केस कंट्रोल होगी, ठीक है, और आपके फिर पब्लिकेशंस में ही सिस्टमैटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस आते हैं, तो उसी तरह पब्लिकेशंस के अंडर ही आपका ऑडिट भी आता है. सो इट्स रिसर्च जनरली रिफर्स टू ओरिजिनल आर्टिकल्स और रिव्यूज, where a question is being asked to test a hypothesis or a new treatment. Okay. I think those are all the questions.